Hello friends. So today we will see a new poem of standard 6 English subject. So let's see what is the name of our poem. Mother to Son. So the name of our poem is Mother to Son. And this poem is written by American novelist whose name is Langston Hughes. So this is a poem. In this, the author Langston Hughes performs the role of a mother. He is performing the role of mother and encouraging son. Encouraging means giving a motivation to son from this poem. So now let's see what exactly the author is telling us. Poet is telling us. Well, because poet means the person who is writing poems, okay, and author means the person who writes the story, okay. So this is the two different person. Poet means the person who is writing poem, and author means a person who writes stories, okay. So now let's start the poem. Well, son, I will tell you. So in this poem, the mother is telling to son. The mother is encouraging the son. Okay. So life for me ain't being no crystal stair. It had cracks in it and splinters and broad stone ups and places with no carpet on the floor. Bare. So see, now in this poem, the mother is telling that for her, the life was ain't. It ain't means hasn't. Ain't means has not. So life for her, it is not a crystal stair. It is not a crystal stair. That means it is not clean, not smooth. So life for her, it was not smooth, not clear. यानी कि जो मदर थी उनके लिए उनकी लाइफ इतनी भी इजी नहीं थी, इतनी भी क्रिस्टल जैसी नहीं थी, ठीक है, इतनी भी स्मूथ नहीं थी. इट हैड क्रैक्स इन इट. इनके उनके लाइफ में भी क्रैक्स यानी कि निडल्स जो रहते हैं ना, निडल्स वर देयर, स्प्लिंटर्स यानी कि जो वुडन के छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, राइट, पॉइंटेड पीसेस ऑफ वुड्स, वो. सो इट मीन्स the life for the mother was not so crystal clear. That means it was not so smooth because it had stack, that is needle. It has a pointed wooden parts and board stone up. Board stone up means the wooden pieces which are lying on the floor. Okay, so board stone up and the places with no carpets on the floor. सो जो मदर है उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज अपने लाइफ में फेस की, जैसे कि उनकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं थी. एंड मीन्स हैज नॉट, ओके. उनकी लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी. उनके भी लाइफ में ऐसे कुछ स्टोरीज थे, जैसे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ से उन्हें बहुत डिफिकल्टी से जाना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उसे निडल बताया है, देन ब्रोकन वुड बताया है, राइट. तो कुछ इस तरीके से डिफिकल्टीज उनके लाइफ में थी. But all the time I have been a climbing on and reaching landings and turning corners. So it means जो मदर थी उन्होंने इतनी सारी डिफिकल्टी को हैंडल किया, इतनी सारी डिफिकल्टी का उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड किया, एंड देन इतनी सारी डिफिकल्टी होने के बावजूद भी वो it means I has, okay, this means I has been climbing on, यानी कि तो भी वो चलती रही, तो भी वो अपनी लाइफ एंजॉय करती रही, तो भी वो रीचिंग लैंडिंग, यानी कि जैसे ही वो डिफिकल्टीज को पार कर रही थी, जैसे उन्हें वो सक्सेस मिल रहा था ओवर द प्रॉब्लम, she used to reach landings. Landings means smooth platform, smooth corners where there are just smooth places, okay. जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि उनके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बट देन टू वो स्मूथ रोड पे, स्मूथ लैंड पे पहुंच जाती है. कब पहुंचती है? जब वो ट्राई करते हैं, जब वो कोशिश करती है, दैट वी शुड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर आरंट बीइंग नो लाइट, एंड समटाइम्स वो कुछ उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया दैट, तो उनकी लाइफ में उनकी लाइफ कैसी थी? डार्क थी. डार्क यानी दैट इज वो बहुत ही बैड टाइम से गुजर रही थी, बट
जब उन्होंने कोशिश की देन तब वो लाइट में आ गई, यानी कि वो लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे स्टोरी से या फिर ऐसे पाथ से मूव होती हैं जहाँ पे उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही डार्क होती है, जहाँ कोई भी लाइट नहीं होती, बहुत ही डार्क होती है, बट देन टू शी फाइट्स द प्रॉब्लम एंड अचीव द सक्सेस. ओके, so boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps. Cause you find it kinder hard. Don't you fall now. तो देखिए उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ भी बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही ऑब्स्ट्रैकल्स उनके लाइफ में आए थे, राइट, बट देन टू वो हमेशा चलती रही, दैट मीन्स वो हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करती रही एंड शी नेवर स्टॉप्ड, राइट, वो हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करती रही. So she is telling to her son that you should also do the same. You should fight the problem. You should make your life colorful, right? कितना भी अंधेरा, that is कितनी भी डार्क होने दो आपके जो पाथ है, then too one day you will reach the colorful light, right? So all this encouragement she was giving to her son. Okay, so now she is telling us that I have fought by all these problems. Now that is your turn to fight with the problems, and you should never stop. You should never stop and not sit on the steps in your life. Okay, you should fight to all the problems in your life. Yes, you might find it kinder hard, means kind of. Kinder hard matlab kind of. Sometimes you might find some situations which is kind of hard, but you don't fall now, right? But you don't fall now, because if you try you can achieve the solution of any problem, right? So for I have still going honey, I have still climbing, and life for me ain't being no crystal stair. So she is telling to fight to all the problems in the life, because for her also the life was not easy. She was also going and going. That means she was enjoying her life. She was trying to fight to the problems, and for her also the life was no crystal stair. That means for her also the life was not a smooth road or a smooth path. Okay. So in this poem, the poet is telling us to fight to our problems in our life, right? Because everyone has problems in their life, but the one who fights to their problem can get success in the life and make the life colorful. So this is what we have studied in this poem. So thank you.